Hi guys, welcome back to my channel. If you are new here, hi, my name is Himanshi and I would be really happy if you take a moment and subscribe to my channel down below. So today I'll be painting Ganesh ji on canvas, and yes, if you are planning to recreate this painting, I would love to see your recreated paintings. So don't forget to tag me and share with me on my Instagram handle. Okay guys, so today I'll be painting on this canvas board which I bought from Amazon. So मैं quickly इसका plastic cover remove कर लेती हूँ. Now I'll be back with basic sketch. सबसे पहले मैं रेड और ब्लैक का मिक्सचर, आई वुड से मरून शेड यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पर मैं बबल रैप से टेक्सचर लाने की कोशिश कर रही हूँ. अब इसी प्रोसेस को मैं रिपीट करके पूरे कैनवस पर बैकग्राउंड पेंट कर लूँगी. रेड कलर से मैं गणेश जी के स्किन एरिया को पेंट करूंगी. ईयर्स को डिफरेंट करने के लिए मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ रेड और येलो का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है. ईयर्स पर मैं ब्राउन के डिफरेंट शेड्स यूज़ कर रही हूँ. मुकुट के लिए मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँगी.
यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को यूज़ करके शेडो पेंट कर रही हूँ। इसके लिए आपको बिल्कुल कम अमाउंट में कलर का यूज़ करना है और वाटर की हेल्प से स्प्रेड करना है। अब मैं गणेश जी को वाइट कलर से आउटलाइन करूँगी। डिटेलिंग के लिए मैं ब्राउन कलर यूज़ करूँगी। मुकुट में गोल्डन मेटालिक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वाइट कलर से ही मुकुट को पेंट करूंगी। मैं ड्रेस में पैटर्न के लिए वाइट डॉट्स बनाऊंगी। Okay guys, finally we are done with this painting. So this is what painting looks like and I'm really happy with overall outcome. So yes, do let me know in the comment section आपको ये painting कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी then don't forget to like, share and do subscribe my channel for upcoming videos.